speaking very beautiful. So what made you confident about this film, and what about Vasan, other than his cuteness, convinced you to put your money on this? So, to begin with, Shriram Raghavan was working on a few stories for us, and Monica, Oh My Darling, was one of them. But as you all know that he went on to direct the cult classic Andhadhun. But Yogesh kept working on this story for the next 5 years. And then it came to Vasan. Sarita will tell you more. Yeah, so after 5 years of working on the script, we were looking for a director, and then we said, Vasan can be the only man who can direct this film. So that's how Vasan came on board. And I would just like to add that Andhadhun has went on to become, a truly classic noir. And we hope that Monica, Oh My Darling, follows in its illustrious footsteps. So we are all here, and we are eager to see how you guys react. Yay. I can't complete this conversation without not thanking Netflix. They've been a fantastic collaborator. Monica, Chetan, Neeti, Vikrant, production team, finance. Without you guys, this would not have been such an ease. Thank you very much. Talia, please, for Netflix. And Sanjay Rautri is not here today, but one big reason for working and this ship sailing so smooth in spite of the waves and all that is him. And also he's actually worked with all the initial films of Vishal Bharadwaj, Anurag Kashyap, Dibakar, Shriram Raghavan. Oh wow. So he's been like there at the foundation of how we gain the confidence that we can come in this industry one day and make films. So it was like a no-brainer to just being chosen by them and to collaborate with them. We miss Sanjay Rautri right here. So guys, now we have a lot of questions from our friends here from the media fraternity, but I have to pick just one question which came via QR code, and the one that I have picked is for Vasan from Shravan Shah from Miss Malini. Thank you for your question, Shravan. Now his question is, how did you choose the actors for this story? What was your casting process like? Because this is a dream cast, let's be honest. So, as you said, the dream cast. So you dream it, and thankfully, what all these actors, they read. And they read very fast and they revert very fast. Oh. Which is unprecedented. So this is like the dream, because I can't, save my life with a narration. And Raj, Huma, Radhika, Akansha, Sikku, everyone, they just read, spoke on phone and said yes. And it never happens, and I hope it keeps happening this way. And did you shoot this through the pandemic? Yeah, through the pandemic. So we had to stall before the second wave, then the second wave happened, then after that we started. That is amazing. Thank you for that, Vasan, and thank you for joining us, everyone. Give it up for Ladies and Monica. gentlemen, it's time to welcome the team of Jogi, film ke director, writer and producer Ali Abbas Zafar, producer Himanshu Kishan Mehra and Amira Dastoor. Let's have a big hand. Zordar thali everybody. क्या बात है सर, बहुत बहुत अमेजिंग मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज हम सबके सामने बैठे हैं, मैंने खुद पहली बार देखा है ट्रेलर एंड आई हैड गूज बम्स और मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक बार नहीं प्लीज 2 बार चलाओ. इट वाज सो अमेजिंग. मैं सबसे पहले अली आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी ज़बरदस्त जब फिल्म बनानी होती है इसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है. सो वुड यू लाइक टू टॉक अ लिटिल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सच अ फिल्म? I think it's a film which is based in reality. It's based out of a real event. सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस फिल्म के लिए था that इस फिल्म को एक ऑथेंटिसिटी से कहा जाए ताकि फिल्म रियल लगे. आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें दिलजीत मिले. तो जो कहानी है उसके लिए दिलजीत का उस कहानी के अंदर होना ऑलरेडी मेक्स इट very very important and justifiable. So yes, there was a process. There's a process that took its toll. We've shot the film in pandemic. So in the first lockdown, we shot this film in Delhi and Punjab. So it was difficult, but I think we are very happy with what we have created now. I think so are we. ट्रेलर देख के बहुत एक्साइटमेंट है. आई एम श्योर फिल्म विल बी अमेजिंग. बट अब मैं बात करता हूँ हिमांशु से. हिमांशु, what does brotherhood mean to you? You're like the big brother of this project, intense project. So what do you have to say? Big brother, I like it.
Brotherhood is everything. It means you're there not only in good times, but in your adversity. You know, we watch each other's back. I think that's what directors and producers do. They're enabling everybody in the crew to give their best. That's what our platform does to us, to everybody around. It means everything. Yeah. All right, okay. Well, Amara se baat kare. Amara, how excited were you when you got to know about this role? What was that one thing that really attracted you ki I must do this? Well, I relate to Kammo a lot. I feel like Kammo is me in a Punjabi suit. Okay. She's really fun, she's adventurous, and yeah, she's very brave. So I just Okay. love that about her. I think every girl will relate to Kammo really well. Arre, kya baat hai, absolutely they will. Acha, one thing that stayed with you when you read the script. That one thing, if you want to tell me. I think Jogi's character, because he's so selfless, and it's so beautiful to see somebody who would just do anything he could to help people. And for me, that drew me in, because I think that's just beautiful. All right, that's amazing. Now, ladies and gentlemen, we have one special thing here. Well, joining us live from UK is none other than the one and the only Jogi. Diljit Dosanjh Paji. Paji, welcome to Mumbai. आइए please यहाँ पे आइए. So that, yeah, Diljit Paji. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਲੀ ਭਾਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਾਜੀ ਹਮਾਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Paji, we've seen the trailer and you know it's really good. We just wanted to hear a little more about your character, the title character, Jogi, from you. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈ है जो अली भाई और हिमांशु सर की टीम ने ये बताने की कोशिश की है और ये हमारे लिए सच्चाई है ये हमारी बात है जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है और मुझे इस बात का सुकून है कि एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रही है जहां हमारी बात पूरे वर्ल्ड में दिखाई जा सके सो ये मेरे लिए जस्ट कहानी या मेरा कैरेक्टर या उस कैरेक्टर के नाम से बना हुआ फिल्म का नाम नहीं एक सच्चाई है जो एक जरिया से लोगों के सामने आ रही है तो इस बात का मुझे क्या बात है बिल्कुल बहुत सही जरिया है नेटफ्लिक्स और उसके जरिए ये पहुंचेगी तो बहुत जगह पे पहुंचेगी ये आपने बिल्कुल सही कहा सर बिल्कुल द स्टेज इज योर्स वेल रितेश सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये जो प्लान ए प्लान बी है इसमें क्या तमन्ना प्लान ए है और आप प्लान बी बिल्कुल तमन्ना प्लान ए है और मैं प्लान बी क्योंकि तमन्ना मैच मेकर है तो उनका प्लान है कि लोगों की शादी कराए और जब शादी होती है तो मैं प्लान बी लेकर आता हूँ मैं लोगों का डिवोर्स कराता हूँ ओके वेल वैसे अगर पूछा जाए एंड देखा जाए यू नो यू हैव डन सम फैंटास्टिक वर्क एंड स्पेशली कॉमेडी ओवर इयर्स एंड नाउ व्हाट हैज चेंज्ड द वे यू अप्रोच टुवर्ड्स कॉमेडी आई थिंक comedy is all about writing 90% goes the credit should go to the writers because they are the ones who decide exactly how it should pan out actors have very little to add because they can only ruin what the writers have done so all we have to do is approach the way the writers have written it and that's what I feel because I have had the good fortune of working with some amazingly talented writers and directors over the last 20 years and I have realized that there's something that us actors tend to fall into what they call typecast कि एक तरह की कॉमेडी आप कर लेते हो तो अगर उससे आपको बाजू हटना है कुछ और करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप नए राइटर्स के साथ काम करें जो कॉमेडी को नई तरह अप्रोच करें एंड आई थिंक प्लान ए प्लान बी इज़ वन सच फिल्म फॉर मी देखा सही कहा जाता है कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस पूरा सोच समझ के करा जाता है उसको राइट मलिका सही जवाब एकदम बहुत खूबसूरती से आपने कहा and thank you Ritesh Malika, thank you Manish for such a fun start to the show thank you all for joining us today I'm Monica Shergill and I lead content for Netflix in India I'm so thrilled that all of you have taken the time out to join us today today is a day to bring out the filmy in all of us
All of us at Netflix are fans of films, and it's a very, very special day for us today because it is the 25th anniversary of the inception of Netflix. Netflix started as a DVD rental company in the US, and you know, we used to rent out DVDs to fans of cinema, bring the joy of cinema to everyone. And in India, we've seen that the viewership of films globally is the highest. You know, the Indians watch the most films on Netflix globally. So it is the time for us to celebrate films in India, the films on Netflix, and the films that all of us love. We are film crazy people. Films dominate all our conversations, whether dinner table conversations, every single day. I mean, I do it. I use filmy dialogues all the time when I'm working with my team at home. I think all of us do that in our water cooler conversations. We keep humming the songs. We keep dancing to the tunes. Films are just such an incredible part of the daily life of Indians. So today is that day for us to celebrate the dazzling and upcoming film slate that we have for you via performances, sneak peeks that we'll give you, and never seen before glimpses and talent appearances. A lot of talent will be here to be with you to celebrate the films that we are bringing on Netflix. Yami Gautam, Sunny Kaushal, Sharat Kelkar, director Ajay Singh, and the producer and writer Amar Kaushik, and co-producer Pooja Vijan. Please, एक बार जोरदार तालियां यार. क्या amazing lineup है आप यहाँ पे देखें यार. Yami, firstly, you're looking gorgeous, and we have two questions for you. Well, what is it acting in a heist thriller like? You know, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ. And do you know Sunny Kaushal's real name? First of all, thank you so much for being here. I think since 2019, I feel this is my first, I think after 2 years, such a big, you know, like a press con where it's a full house there. I wish the cameras could be panned that side. And it feels kind of, you know, it feels good. अच्छा लग रहा है देख के. अच्छा लग रहा है. Now, coming to your question. Yes. It feels really good. It feels really good to be part of a, you know, a heist thriller. And there are many reasons for me to feel good about this film. First, of course, I'm not going to count Pooja, my zillionth association with Maddock, with Amar, the person who made me debut, you know, to be able to act in a film which is, of course, उन्होंने लिखी है, but पहली film है उनकी बतौर a co-producer, so I feel really, really happy. Ajay, do not go by his expression. He is just don't go. He's one of the बहुत और है भी, but he's one of the sweetest, you know, directors I've worked with. Shahid, of course, everybody knows what a talent he is. Absolutely. Sunny, we're gonna come to, you know, with your real name. Yeah. I don't think इनका नाम Sunny ही है. In fact, मुझे कहानी भी पता है कि इनका नाम Sunny क्यों है. अच्छा. तो इनका नाम, अब ये कुछ भी आपको बोले information है, इनका नाम Sunny ही है. अच्छा, मतलब रियल नाम सनी ही है. जी. अरे क्या बात है, सनी बॉय. मुझे कहानी भी पता है मुझे तो. हाँ यार, मैंने बताई है एक्चुअली, करेक्ट यार. क्या बात है. चलिए, ये तो बात होगी, लेकिन अब सनी कौशल से भी मेरे पास दो सवाल है. पहला, यार, हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस फिल्म, एंड सेकेंडली, क्या आपको सही में एयरलाइन की अनाउंसमेंट करनी आती है? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, guys, thank you for being here, and the experience on the film was fabulous. I think it's one of the best scripts that I ever read, one of the best films that I ever came across, and thank you, Amar sir, Pooja, Dinesh, and Ajay sir, for giving me this film. This is not my award speech, but it is sounding like one, so sorry for that. And it was just a fabulous experience working on it. The role is something that I was actually very excited to do. And yeah, coming to my other answer. Yes, announcement. बिल्कुल भी नहीं आती. बिल्कुल भी नहीं आती? देवी और सज्जनों. नहीं, ये तो एयर होस्टेस हो गया ना. देखिए आजकल that तो you would know actually. But it'll be interesting to see. Please. नहीं, आप करिए. यार, I think I can try. हाँ? मैंने फिल्म में किया था, बहुत मजा आया. हाँ, correct. I can try. I think what pilot. I can do a little pilot. हाँ.
नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस विमान में स्वागत है। आज हम ऊंचाई भरेंगे 32,000 फीट की और हम इस दूरी को पूरा करेंगे 2 घंटे 30 मिनट में, आशा करता हूं। यार इतना ज्यादा गंभीर पायलट हो, कसम से मैं पैराशूट लगा के खुद छलांग मार दूं नीचे। बट वो ऐसे ही साउंड करते हैं ना, दिस साउंड रियली लाइक यू नो एक्चुअली यार कई बार इतने बोर्ड लग रहे होते हैं कि मैं तो माला और तेज जपने लग जाता हूं। भाई इसका तो मन ही नहीं कर रहा फ्लाई करने का यार। नहीं, वो भी होता है ना उनका कि दिस स्टार्ट ऑफ एंड दे कट द सेंटेंस ऐसे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस फ्लाइट में स्वागत है। आज हम आशा करते हैं कि आपको और कईयों के बीच में बोले थे नमस्कार देवियों लेफ्ट में देखिए वहां पे पहाड़ियां, पता नहीं बीच में आ गया। चलिए ये तो सबका चलता रहता है, लेकिन But it's a serious business and we really respect them for नहीं एब्सोल्युटली मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मेरे तो दिल्ली में कई दोस्त होते हैं, वो थोड़े हैप्पी होने के बाद फ्लाइट में चढ़ते थे, कहते भाई प्लेन तो मैं ही चलाऊंगा। थैंक गॉड उन्होंने कभी प्लेन नहीं चलाया, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है और जो करते हैं बहुत बाखूबी करते हैं। लेकिन अब जरा उसकी बात करते हैं। ये एक्टर जो है ना, ये कमाल करता जा रहा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शरद केलकर, इनका वो हाल हो गया जब ये स्क्रीन पे एकदम से आते हैं ना, एंट्री मारता है, धमाक एकदम से बम फटता है ना। शरद यार मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, ये जो हाई थ्रिलर है यार, तुम्हारा रोल क्या है इसमें एंड हाउ डिड द फिल्म हैपन टू यू? वो तो मैं बताऊंगा नहीं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं पहले सॉरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप पैरों से बात ना करें, थोड़ा ऊपर से बात करें, इतनी गहरी आवाज है। वो तो मैं बताऊंगा नहीं मेरा रोल क्या है, बट इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज एक्चुअली कहानी है इस फिल्म के लिए। एक्चुअली मैंने एक सॉर्ट ऑफ ऑडिशन ही दिया है एक फिल्म करके अमर की, तो उस फिल्म में मैंने मैं छोटा सा हिस्सा हूँ। वो ऑडिशन था मेरे लिए कि फिर सोचेंगे कि तुमको चोर निकल के भागा में लेना है कि नहीं लेना है। तो फिर सेम डे दे टुक अ कॉल कि नहीं, लायक है लड़का, लायक है, कर लेता है काम। यार ये पहला बंदा है जिसको फ्लाइट में ये लोग पहले ही कहते हैं सर आप लास्ट सीट पे बैठे, बिकॉज आपकी आवाज वहां से भी बड़ी आसानी से सुनाई दे रही है। ये बिजनेस में जाके बैठते हैं उनको पीछे कर देते हैं यार, मतलब अमेजिंग। लेकिन अब जरा बात करते हैं जैसे So how was it directing such a strong cast? अगर मैं आपसे बात करूं, it's not easy handling such brilliant actors एक बार एक ही साथ फ्रेम में आ रहे हैं. How was the experience? See, first of all, we know about the variety which these two casts get in the film. Absolutely. But I want to talk to about something else. Basically, the earnestness which Sunny brings in and the precision which Yami brings in. Yeah. I tell you one thing: we have seen the film, and she has not got even a glance wrong in the film. That's how good she has been in the film. So you come and see her where she has taken that character, and it was a pleasure working with them. Thank you very much for being on the film. Ajay sir, thank you. So sweet. ये सच में से अवार्ड शो का लग रहा है ना, जैसे हमें मिल गया अवार्ड। यार लिटरली वही मेरे को अवार्ड नाइट वाली फीलिंग आ गई थी। मैं प्रेजेंटर्स को बुलाने वाला था, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब जरा बात करते हैं अमर से। अमर जी, ये आपने जो हाईएस्ट थ्रिलर बनाने का और लिखने का जो इंग्रेडिएंट है इकट्ठे कर लिए, तो ये करने के लिए बहुत सारी हाईएस्ट थ्रिलर्स देखनी पड़ी आपको एक्चुअल में? नहीं, देखनी नहीं पड़ी। सबसे पहले तो एक बोलते हैं ना, आपने बोला इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं है। एक कढ़ाई ली, हाँ, उसमें सबसे पहले तेल गरम किया। उस गरम तेल में किसको पहले डाला? यामी को? नहीं, पहले कहानी, पहले हाईएस्ट पहले आएगा, ये सब बाद में आएंगे। सो कुछ नहीं, लिखते लिखते जब शुरुआत करी थी, लिख रहे थे मैं और शिराज, 2 लोग थे। ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने लिखी थी। तो जब लिख रहे थे तब हम लोग बहुत अलग स्क्रीन प्ले था, फिर स्क्रीन प्ले चेंज हुआ, फिर लिखते लिखते आया ये बहुत सिंपल कहानी हो रही है, सिंपल देखनी नहीं चाहिए, थोड़ा घुमाते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, उनको सिंपल चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो घुमाते हैं। तो पूरा ऊपर से नीचे, इधर से उधर करते करते कुछ कमाल निकल के आ गया। तो यही है बस। क्या बात है। तो मेरे को ऐसे ही मैंने उसे, मुझे लगा कि टबू से करा सकते हैं, तो सडनली मेरा एक्साइटमेंट हो गया। तो मैंने उसका सेक्स चेंज कर दिया, कैरेक्टर का क्या जेंडर चेंज कर दिया। क्या बात है। आपने मतलब इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस आपके दिमाग में आया, आपने कहा नहीं ये तबू मैम जो है वही करनी चाहिए, तो आपने एक्चुअली आई फाइंड ए रीजन टू वर्क विद टबू। तो मुझे तो मेरे लिए कोई भी फिल्म बनाने का मतलब है कि मैं टबू को उसमें कैसे लेके आऊं। वाह, क्या बात। मैम आपका क्या कहना है? कोई हो सकता है क्या किसी एक्टर के लिए? क्या बात है। इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। And on that note, can we know a little more about Krishna Mehra, the character you're playing?
I mean, professionally, she works in counter-espionage unit, but I think the person she is far more layered and interesting and all that. And I think there's a strange and weird parallel between what she's doing and what her life is and who she's being. So I think आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा कि how all these things intertwine. Yeah. Wow. And Vishal sir, what made you tell this story in particular? या आई थिंक हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हम जो फिल्में हमने बनाई हैं उसमें जब भी एस्पिनाज जॉनर आता है तो वो उसमें स्पाई थ्रिलर और एस्पिनाज जॉनर ये दोनों मिल जाते हैं और एसेसिन उसमें स्पाई के ऊपर एसेसिन आ जाता है जो कि बॉन्ड या उस तरह की फिल्में या बॉन्ड आइडेंटिटी उस तरह का या अभी ग्रे मैन जैसे जिस तरह से आई तो मुझे लगा वो स्लो बर्निंग जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो ज़िंदगी होती है जो कि उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं आना होता है एकदम साए में रहना होता है शेड में रहना होता है वो मेरे लिए हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग था और हमारी R&AW जो हमारी एजेंसी है वो ओवर सीक्रेटिव है पब्लिकली आने के लिए आप बाहर का अगर देखें हम लोग FBI या CIA उन सबकी स्टोरीज एक या उनके जो वर्किंग पैटर्न है उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं हमारे यहाँ बहुत सीक्रेटिव है और ये जब नॉवल मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत यूनिक लगा इट मेक्स यू सिट इन R&AW ऑफिस when you read this the detailing is so beautiful dramatically because उसमें ये it's based on a real case which happened in 2004 where R&AW had a mole in their office so ये उस डिटेलिंग जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी वो मेरे लिए और उसको एक फिल्म में लेके आना उसको ड्रामा उसके अंदर क्रिएट करना उसमें कितना फिक्शन है कितना रियल है ये आपको देखने के बाद अंदाज़ा नहीं लगे तो वो मेरी कोशिश थी और वही मेरी इंस्पिरेशन थी क्या बात है लेकिन मैं तबू मैम आपसे सीखना चाहता हूँ कैसे कहा जाता है फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस कहते हैं ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी कमाल की है जब आप डायलॉग डिलीवरी कर रही होती है तो कैसे ख बोला जाता है कैसे बोला जाता है प्लीज खुफिया खत्म क्या बात है खत्म खाली आपने खुफिया बोला मैं तो खत्म हो ही गया इतने प्यार से आपने मेरी किस्मत पहली बार किसी ने मुझे खुफिया बोला और मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन और ये है ना करेक्ट करने के लिए डबिंग में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे तब वो नुक्ते का ख्याल रख लेना बस वाह सर को भी बहुत ज्यादा होता है ना परफेक्शन का जो गुलजार साहब और इनके साथ काम करना मतलब नुक्ते संभालो भाई अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जब आपके पास एक फिल्म की स्क्रिप्ट आती है ना तो क्या होता है क्या ऐसी चीज आप स्क्रिप्ट में देखती हैं या पढ़ती हैं और पढ़ते आपको लगता है दिस इज द रोल फॉर मी मैं ये करना चाहती हूँ विशाल जी की हर स्क्रिप्ट पढ़ के यही लगता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है और आई थिंक हमेशा ऐसा ही होगा ये जो स्क्रिप्ट लिखेंगे मुझे ही सोच के लिखेंगे मेरे लिए ही लिखेंगे कोई और एक्टर्स करे वो अलग बात है लेकिन लिखी तो मेरे लिए जाएगी क्या बात है ये भी अच्छी बात है बड़े ही प्यार से जो अभी आपकी धमकी दी है विशाल सर को लेकिन ये ऐसा ही रहे आई थिंक ये जो एक आप दोनों का रिश्ता है जो इसके कारण जो हमें एज एन ऑडियंस जो कमाल की फिल्में देखने को मिलती है अदाकारी देखने को मिलती है डायरेक्शन देखने को मिलती है आई थिंक वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती लेकिन आज देखिए मौका मिला है विशाल सर हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे मलिक और मैं अभी बैठ के पीछे बात ही कर रहे थे कि यही मौका है आज नेटफ्लिक्स के इस माध्यम के जरिए हम चाहते हैं कि आप जब भी चाहें हमें जब भी फिल्म देनी हो प्लीज फील फ्री आप कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं मैं नुक्ता और नुक्ता चीनी दोनों का ख्याल रखूंगा सर जी हाँ प्लीज तो ये मौका हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल तुम भाई के अलावा भी रोल करोगे ना जी हाँ बिल्कुल अरे क्या बात है The best of my life. I love it. मलिका का तुम फैन हो मैं फॉलो करता हूँ उसे मलिका उस एंकर का नाम है कितना अच्छी हो तुम मलिका कितना बढ़िया तुम टांग खींचती हो इंस्टाग्राम पर लोगों की क्या बात है यार ये तो मतलब कमाल की लेकिन अगर मैं सर आपसे बात करूँ आप खास तौर पे क्या चीजें देखते हैं जब आपको अट्रैक्ट करते हैं कि इसे पर्दे पे लाना चाहिए कुछ ऐसी चीजें एकदम से याद आती हैं आपको जो आपको अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा
कहानी की बात कर रहे हैं कहानी सर, कहानी। आई थिंक वो कहानी पढ़ते हुए एक्चुअली पता लग जाता है, बिकॉज ये प्रोसेस जो हमारा फिल्म मेकिंग का, ये इतना मुश्किल प्रोसेस है कि आपका कमिटमेंट जो 1.5-2 साल के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं होता है, तो वो उस कमिटमेंट में जाने से पहले बड़ा डर लगता है। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि आई वेट फॉर दैट थिंग टू अराइव फ्रॉम विद इन मी, कि वो पता चलता है कि हाँ ये कहानी के लिए मैं 2 साल दुख झेलने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज इट्स अ पेन टू मेक ए फिल्म एंड टू गो थ्रू दैट आर्टिस्ट जर्नी इज वेरी वेरी पेनफुल, और बहुत उसमें आपका खून पसीना दिल सब कुछ उसमें लग जाता है। तो वो कहानी अपने आप आपको खींच लेती है कि हाँ, तो जैसे बहुत फिल्मों में हुआ, जैसे ब्लू अम्ब्रेला में हुआ, या मैकबेथ जब हम लोग मकबूल कर रहे थे तब हुआ, हैदर में हुआ, और तो या वो हर फिल्म में हुआ वो, पर वो उस मोमेंट में पहुंचने के लिए वो अंदर से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बनाए बिना अब मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ओके, सो वो आपका आ जाता है कि आई विल बी स्लीपलेस, आई विल बी रेस्टलेस इफ आई डोंट से दिस स्टोरी। ऑलराइट, कुछ इस पे बढ़ाओगे बात को? सर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं थी पहले जी, मुझे काम करना था अन्विता मैम के साथ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड इनकी डीए थी, तो इन्होंने कहा ऑडिशन करो, तो मुझे सोचा भी नहीं कि क्या स्टोरी है क्या स्क्रिप्ट है, मैं बस चला गया ऑडिशन करने। एंड देन एट दैट टाइम बाबा हैड जस्ट पास, सो आई वाज वेरी ब्रोकन एंड वल्नरेबल, सो क्लीन स्लेट, इफ यू गो टू द ऑफिस इट्स अ वेरी फैमिली होमली वाइब, सो दे मेड मी फील वेरी सेफ एंड मुझे भी ऐसे लगा था, एकदम सेफ फील कर रहा था मैं आपके साथ बहुत। बाय द वे हमारी जो डायरेक्टर हैं वो उनके अंदर ममत्व बहुत है, और अपने सब एक्टर्स का मतलब ऐसे बहुत प्यार से ध्यान रखती हैं, संवारती हैं और उनको तराशती हैं। तो पूछते हैं तृप्ति का क्या रहा? जी, I mean it's my second film with Anvita, and by now I think everyone knows that she's like a mother figure for me. And बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमने काम किया फर्स्ट फिल्म बुलबुल में, और कला में आई थिंक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी एक दूसरे की। झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोल रही बट इट वाज अ वेरी, सेट पे ना बात करना भी अलाउ नहीं था, याद होगी। वो बात तो सच है बट करना पड़ता है। देंगे नेक्स्ट फिल्म में देंगे काम, ऐसा नहीं है, देंगी ना पक्का। आपका क्या रहा? ये सेट पे भी होता था, मैडम पीछे मुड़ती थी। Hi, good afternoon everybody. What question did you ask me? बोलो, आप कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। No, I felt very glad and thrilled and excited that Anvita called me for Kala and said that she doesn't need me to give any audition. And it really freaked me out. My panic mode was on, that how can this be possible? And once I went to Clean Slate office to meet her, I remember I was continuously asking her and Karnish, नहीं देना है audition, ऐसे कैसे हो गया? But I think she is a very beautiful person, and she makes everybody feel very confident, and I don't know, I think I've never looked so beautiful on screen the way I'm looking in Kala, and yeah, I found... Me too. I've never looked this good. Shut up. Ever. Gunda, villain, police, hinterland. Mawali. पहली बार मुझे ऐसे सूट वूट पहनाया गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। Amit Sial has gone into the classy mode. Yeah. Yeah. Not talking in that, that language you usually talk in. Funter language. Yeah. So, and I think I've found new kind of love for myself after working with Anvita, because she sees beauty everywhere. So thank you for giving me Urmila, and I think Tripti is so humble and grounded, and I think we really bonded well, and yeah, we really used to chat a lot, so yeah, had a lot of fun and have very warm memories. Thank you, Babu. मेरे बारे में कुछ नहीं बोला आपने?
आपके साथ मेरे साथ काम करके कैसा लगा हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके When I first saw Amit Sial in Kashmir, I remember we were having dinner and I was going and telling everybody, he's the inspector, right, from Mirzapur. He's that guy, right? He's that fan. And then I said, he is so hot. He's hotter in person. Can somebody please just introduce me to him? मुझे पहली बार लाइफ में पता चला था कि मेरे अंदर भी कुछ है हॉट मुझे पता ही नहीं था ये Thank you so much. Yes, and then when I went and told him, sir, I'm Swastika, I'm working in this film. Full atti diya tha, हाँ इसने. Oh, really? Hi, nice to meet you. I'm like, अच्छा ठीक है कल देखेंगे. No, I'm shy इसलिए. Stop it, bullshit. Thank you. आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में कि आप थक गई हैं फिल्म बनाते नहीं, I love my film. नहीं, I just want to quickly just talk about what the film means and why these people are so special for me. So I'll start with our God particle, that is Babel Khan. It's his first film. It was the first time on set and he was amazing. He's got this raw energy, he's got great presence and he's just beautiful, and he was playing this very innocent, you know, God's child kind of a character, and he's just incredible in it. आपको पता ना कितनी मेहनत करता है वो गॉड लाइक दिखने के लिए खाना नहीं खाता है बेचारा नहीं तब खाता था चाय कॉफी नहीं पीता है मैं खाता अब खाना सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाता है So, and Tripti and Swastika are playing mother and daughter in my film, that is Kala and Urmila Manjushri. And the three of them, actually the four of them, are all singers and musicians. The film is about music. It's about how your life's journey can break you and build you up again, and how music plays such an important part in it. It's about parenting. It's about the impact, good or bad, parenting has on you and on your mental health. And he is... मुझे पता नहीं मैं वही हूँ मैं So he is just incredible, okay, as a human being. अरे आप expectations बढ़ा रहे हो सबके As a human being and in the film. मतलब even when we are grading, when we are doing DI, when you watch footage on silent, आप उसमें dialogue sound कुछ नहीं होता. So you're just watching कि आप colorist के साथ बैठ के grade ठीक कर रहे होते हो. And whenever he comes on screen, you should see me, my DOP, and all of us just go, yaar, like that. He's just so good. अगली फिल्म मिलेगी हाँ बिल्कुल. And he's again, like I said, he's playing a musician. The film is set in late 1930s, and he's playing a composer from the film industry. And I want to ask you, sir, कि आपको कैसा लगा इस पिक्चर में काम करके? मुझे I think सबसे पहले तो इसीलिए अच्छा लगा कि आपने जो मुझे सूट्स पहना है ना फिल्म में, जो मुझे कभी पहनने को नहीं मिले आज तक. और actually in all seriousness, when you offered me this role, when you gave me the script to read, I had to be a part of it. I think that would have been the case with everybody on this stage right now, and everybody who participated. Before the script also. अच्छा. मैं पढ़ लेता हूँ यार. But it's a fantastical film. It is fantasy mixed with real life and real characters, and just to showcase that era of music and poetry, and beautiful film. Thank you for making me a part of it. Thank you for saying yes. Thank you.